Namaste, Jai Hind, and welcome to this edition of The Right Perspective. And tonight we'll talk about a subject which now suddenly is gathering a lot of conversation and discourse. This is about not just getting our history, but also getting our cinema right. A lot of aspects where perhaps certain narratives would feed Indian cinema, how things would be conveyed, narratives, etc. But moving beyond that, perhaps the success of movies like The Kerala Story, The Kashmir Files, Samrat Prithviraj, these are all stories which actually try and set historical perspective and events as they happen. जैसे कहा जाता है इतिहास. That means itihasa, as it happened. Sometimes it's convenient, sometimes it's not convenient, but it's going beyond narratives and accepting what is happening in society. Joining us now on this conversation, whether this effort is now slowly getting more momentum and will more people be encouraged to say it as it is. Gautam Chintamani, author and film historian with us, Ravi Rai, director with us, Gajendra Chauhanji, former director of the FTII, and of course, actor, and spent many, many years in this industry. So, namaste, gentlemen. Jai Hind. Thank you very, very much. So, सबसे पहले, Gautam Chintamani, where would you stand as somebody who writes about films, who critiques films, who's understood the history of films? आपको लगता है this is important? This entire tone, resetting of perhaps, or the effort to make cinema right, quote unquote. I don't think it's as much an effort to make cinema right. It's about presenting a perspective. And, the old adage that there are two sides to every story. Sometimes there are multiple sides that we don't want to talk about. And I think certain hard facts about our society, whenever they are represented on celluloid, there is bound to be some questions that are raised. But the bigger aspect is that these are things which are rooted in popular culture, popular history. And many of us have been witness to a lot of things such as this, like you just mentioned, Kashmir Files. This was something which just happened 2.5 decades ago. It's not like it existed in a vacuum. There was reporting happening at that time. And if a film is going to put things in perspective, it is offering people a point of view to look at. You may disagree with it, you may agree with it. I don't think it's an effort to put cinema right, because if cinema were to put in either political context, then cinema has been left for a very long time. There is no doubt about that. I mean, you just have to read what Lenin did, how Eisenstein made his films, or what the whole US government did during the war efforts. Cinema has always been left of center. Certain truths don't make for fancy stories as far as filmmakers go. I also stick my neck out and say that you show me one film which is not adhering to a leftist ideology in that sense, becoming popular globally. It'll be very difficult for you to find that example. So I don't think this is an effort to set cinema right, like you mentioned. But I think it's an effort to tell stories which take place around us. And this is just one of the mediums to talk about it. One of the aspects, Gajendraji, is about culture, Indianness. A certain level of Bharatiyata also to bring in, as along with perhaps saying uncomfortable truths, bringing uncomfortable truths into the mainstream. You believe this exercise can happen? You believe more and more filmmakers will be enthused with this idea? या फिर आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई है इसको लेकर? देखिए, जैसे world is changing, the country is changing, the society is changing. With the society, cinema is also changing. And it has to change. Change is the law of nature. So, cinema, right cinema, left cinema, मैं इससे नहीं मानता हूँ. Cinema is a way of expressing your thoughts, basically. और cinema अच्छा वही होता है जिसमें हमारे जितने भी सिनेमा के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सिनेमोग्राफी, ऑडियोग्राफी, एडिटिंग, राइटिंग, आर्ट डायरेक्शन वगैरह वगैरह, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जब सारी चीजें कंबाइंड होकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं तो अच्छी फिल्म होती है. और अच्छी फिल्म वो होती है जो लोगों के इमोशंस को जगा सके. पहले आप देखिए, बहुत पहले बोला जाता था कि ड्रीम सेल्स. पहले सिनेमा को एक ड्रीम की तरह पेश किया जाता था. आजकल क्या है? रियलिटी सेल्स. रियलिटी ऑल्सो सेल्स. अगर आप पिछले दिनों जो भी फिल्में बनी है, जैसे आपने कश्मीर फाइल का जिक्र किया, अभी एट द मोमेंट केरला स्टोरी चल रही है, दीज आर बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स. एक्चुअली जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसके फैक्ट्स ढूंढे और
पब्लिक को, पेरेंट्स को, कंट्री को जागरूक करने में बड़ी मदद की है कि इस तरह के केसेस आपके कंट्री में हो रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए, बी अलर्ट अबाउट इट। तो मुझे लगता है सिनेमा इज सिनेमा विच इज, आई डोंट थिंक कि राइट सिनेमा हो, लेफ्ट सिनेमा हो, यू हैव टू पुट द सिनेमा इनटू राइट वे। सिनेमा इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, और वो थॉट्स जैसे कहते हैं कि सिनेमा इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी में जो होता है वही सिनेमा में दिखाया जाता है। तो इसलिए सिनेमा को मुझे लगता है डिवाइड करना ठीक नहीं है। सिनेमा को सिनेमा रहने दिया जाए और सिनेमा को सिनेमा की तरह पेश किया जाए। ये जरूरी नहीं कि हम हर फिल्म में भारतीयता दिखाएं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उन सारों को मिला के अलग अलग फिल्में बनाई जाएं और लोगों तक पहुंचाई जाए। और मेरा मानना हमेशा ये है कि मैंने बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ बहुत काम किया है। उनका हमेशा एक थॉट होता था सिनेमा के बारे में, इस अच्छा सिनेमा वो होता है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एंड में एक मैसेज देके जाए। वो मैसेज कैसा हो ये राइटर के ऊपर है, लेकिन वो मैसेज के साथ अगर जो सिनेमा होता है वो राइट सिनेमा होता है। क्योंकि इसमें आर्गुमेंट्स बहुत सारे हैं। अगर हम कहें कि एक तरफ कहा जाता था कि जितने पोएट्स पहले जो लिरिसिस्ट हुआ करते थे वो उर्दू शायर होते थे, तो उन्होंने उर्दू जबान को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी, रवि राज जी। फिर आया कि हमारी सिनेमा जितना रियल से इंस्पायर होता है, द सेम वे रियल इज ऑल्सो वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज शोन ऑन रील। सो एपिंग द वेस्ट, गोइंग अब्रॉड, looking at foreign locations, and bringing in more of the Western aspects and aping that and making that cooler than traditions, our own culture, our own lifestyles, our own things, showing it it is also somewhere society got influenced. Then, of course, then it comes to narratives. When you talk about history, when you talk about incidents that have happened, how you try and show it. Do you sugarcoat the, gory details or the uncomfortable truths, or should you say it as it is? Where do you stand amidst all this? Do you believe cinema needs a bit of a correction? Was it swinging too far away in one direction, and it just needs to be brought back somewhere in the center? No. Listen, Anand. Very honestly, I really don't think that cinema needs any kind of correction. I mean, freedom of expression and freedom of whatever we talk, our opinions are very important. And if you take that away from a writer, from a creative, from a painter, whosoever, I'm saying a creative, you just clipping the wings of the person, है ना? Or the world is getting smaller and smaller. Today, a Spanish is getting married to a Bihari, the South Indian is getting married to somebody and somebody. So world is getting smaller. Culturally also, in few years we'll find ourselves in on a equal. So that's not. I mean, for me, cinema doesn't need any checks and boundaries except for I don't hurt you. But when I say I don't hurt you, I mean I don't hurt your beliefs is very important. I mean speech, freedom of speech comes with a lot of responsibility. I mean इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी माँ को गाली दे दूं, तुम्हारे भगवान को गाली दूं, नहीं, वो हमें एक बरतना पड़ेगा. Right now, what we are talking, we just mentioning these two films, the Kashmir Files and the Kerala Story. इन दो कहानियों के अलावा जो हमारी जितनी कहानियां भी चली हैं, whether it was Patahan, whether it was Brahmastra, Gangubai, Padmavat, I mean, none of them had a narrative that, assaulted you. And as far as Kerala Story is also concerned, देखिए क्या होता है आनंद, मेरा ओपिनियन जो है ना, कभी कभी आपके लिए एम्बेरसमेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें सत्यता दिखाई गई है. किसी भी किस्म की सत्यता विल ऑलवेज बी एम्बेरसिंग टू समबडी, और हम उसको एक नाम दे देते हैं, कंट्रोवर्शियल या प्रोपोगेंडा या डिसहार्मनी, ये अलग अलग नाम दे देते हैं. अच्छा, हिस्ट्री अगर अकबर की कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ तो बुराइयां भी होंगी. हिस्ट्री तो लेयर्स में ही आती है ना. तो आप एक लेयर दिखाना चाहते हो, मैं एक लेयर दिखाना चाहता हूं. अगर हमारे देश में मुल्क का जो डायरेक्टर है उसने ये दिखा दिया कि मुसलमानों का ये हाल है इंडिया में, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं तो आपको ये बताऊंगा कि भैया 135 करोड़ में से 11 जने रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट में. तो आज भी 2006 में तो मैं प्लेयर्स गिनवा दूंगा आपको कि 6 मुस्लिम खेल रहे थे 11 में से. आज 5 खेल रहे हैं. आज मैं आज की बात कर रहा हूं.
तो वो मेरा अपना ओपिनियन है. मेरे तो 3 खान मेरी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो मेरा पर्सपेक्टिव है. सो फॉर मी इट इज अ वेरी ग्लोरियस टाइम. आज कश्मीर पार्टिसिपेट कर रहा है. सो ऑलवेज ओपिनियंस, आनंद, दे कम इन वेरिएबल्स. So I don't think cinema needs, or let's not get into searching for right cinema. Let's discuss cinema right now. There are filmmakers who have their own way of telling stories. I mean, we have Raviji here. I mean, most of his work reflected society which was going through a kind of change that was not seen for a very long time. So there will always be somebody to tell a story a certain way, which is slightly away from the norm right now. I really liked what Raviji said, that let's discuss what is happening to cinema right now. There is a big demand from the audience to see something which they are not getting. And this was really, really hastened up, this change, thanks to the period of COVID, when people were exposed to different kind of material. And also there was a revival of sorts, I mean, there was Ramayana on television, Mahabharata was also great. And these are great stories. To go back to what Gajendra ji was saying, I mean, you look at somebody like a B.R. Chopra, all his films had a message. And be it Naya Daur, or be it Nikah, which he originally wanted to call Talaq, Talaq, Talaq. It's one of the big statements on society undergoing a change at that time, and it predates the Shah Bano judgment. Yes. So, to tell an Indian story is the need of the hour. Right now, I think that for a brief period between the late 2010s and the last 5-6 years, there was a slight sense of confusion as to what stories to tell. And I always give the example of 2 TV shows. Look at Money Heist. It's a show that did exceptionally well in a country like India. It was a dubbed show. And look at Farzi right now, which is doing quite well globally. So to tell an Indian story, a story rooted in Indian ethos, will always be welcome, whether be it the 1950s or be it today. Today, for the lack of a better term, filmmakers believe that a certain kind of cinema sells. Thodi galiyan usme zyada hoti hain. You want to show a certain reality of life. You start thinking that if you abuse a little more on screen, maybe you will get the eyeballs. Initially, that's fine. People may like that. But beyond the point, people still want to hear a good story. And I think Indian stories traditionally are rooted in such fantastic messaging. जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली does not represent all of India. Same way, Mumbai does not represent all of India. तो ये वहां से बाहर निकलकर अंदर जाकर जमीन से जुड़ने की जरूरत है. या फिर आपको लगता है कि आज फिल्म मेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि अगर यहाँ करूंगा तो यहाँ से ट्रोल हो जाऊंगा, वहां करूंगा तो वहां से ट्रोल हो जाऊंगा. ये इस असमंजस में भी तो कहीं नहीं फंसे हैं फिल्म मेकर्स. मैं आपके मूल सवाल पे लौटना चाहता हूँ. आपने बाहर से चित्र साधना की बात की जी. Any organization which talks about the Indianness, to make films on Indianness, I'll be the first person to support them. See, as he said, it's a need of the hour. It is the basic need of the country, rather. We should be, हमें अपनी कंट्री के बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए. हमें बताना, बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को बताना पड़ेगा कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति क्या थी. एंड द बेस्ट थिंग भारतीय चित्र साधना is not imposing it. They are just suggesting that you should make film about Indianness. और Indianness के ऊपर फिल्म बना, भारतीयता के ऊपर फिल्म बनाना या भारतीयता को कोई संदेश देना, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, मैटर ऑफ प्राइड है एक्चुअली कंट्री के लिए. इसलिए इसका कोई संदेश रॉन्ग नहीं है. Cinema, as far as cinema is concerned, nobody can impose their own thoughts. It's very individual thought. जब राइटर जो है एक पेन को पेपर से मिलाता है और लिखना शुरू करता है, तो उसका जो थॉट होता है वो पेपर पे आता है, और उसको जो है बाकी लोग, जो टेक्निकल लोग होते हैं, डायरेक्टर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, फाइनेंसर हुआ, बाकी लोग मिलके उसके सपने को साकार करते हैं. और मैंने आपसे कहा था, पहले एक जमाना था जब ड्रीम सेल्स करते थे, आज रियलिटी सेल कर रही है. जिस तरह से आपने पीछे कई फिल्मों के नाम लिए हैं, ये रियलिटी है इस देश की. और रियलिटी जो है वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नकारात्मक फोर्सेस काम कर रही हैं, उसको सकारात्मक कैसे बनाना है. ये सारा थॉट जो है, मुझे लगता है सिनेमा इज ए मास मीडिया, एंड विद सिनेमा वी कैन डू इट मच इजियर वे देन एनी अदर वे. ब्रदर, सिनेमा इज ए पैशन, सिनेमा इज ए कन्विक्शन. आप जब तक इन 2 चीजों को साथ ले, डेडिकेशन, ये सारी चीजें मिलके जो है सिनेमा बनाती हैं.
जिस व्यक्ति में ऐसी चीजें होंगी वही ये रिस्क लेगा। रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी वो बात की बात है, लेकिन फिल्म को बनाने की चीजें लेने के लिए ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पैशन होना बहुत जरूरी है। सिनेमा में वही सक्सेस हो सकता है जो सिनेमा को अपना प्रोफेशन बाद में माने, पहले पैशन माने। तो ये अगर विपुल शाह जी ने हिम्मत की है तो ही कुड हैव अफोर्डेड इट एक्चुअली, और वो ही वाज वेरी कन्विंस्ड अबाउट हिज सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट कुछ ना हो लोगों तक पहुंचेगा और एक बहुत बढ़िया संदेश लेके जाएगा। आज कोर्ट में उन पार्टियों की या उन लोगों की हार क्यों हो रही है? इसीलिए हार हो रही है बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। विपुल शाह जी इज वेरी कन्विंस्ड अबाउट हिज सब्जेक्ट, इसलिए कोर्ट ने भी जो है उनके फेवर में जजमेंट दिया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में जिनकी राजनीति कमजोर होती है ना, वो ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। बाकी लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता। सिनेमा को सिनेमा की तरह देखिए, सिनेमा को मैसेज की तरह देखिए कि वो हमारी जिंदगी में क्या ऐड कर सकता है। तो मुझे लगता है केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल ने वो काम किया है जो अब तक बहुत बड़े स्तर पे अधूरा था, और वो अब पूरा होता दिख रहा है। बट सिनेमा, रवि जी, हैज बीन यूज्ड, सिनेमा म्यूजिक हैज बीन यूज्ड। अगर आप पंजाब में देखें, ये जो गैंगस्टर कल्चर आया, लिरिक्स के अंदर अलगाववादी तत्व जो ऐड किए गए, वो सब यूके से जो म्यूजिक आया उसकी तरफ से आया। अगर आप यूके से जो पंजाबी गाने आ रहे हैं, जो हिट हो रहे हैं, जो बज रहे हैं गाड़ियों में, लाउड स्पीकर पे जोर जोर से बज रहे हैं, गाड़ियों में बज रहे हैं, उनके लिरिक्स आप सुनेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा अलगाववाद स्लोली इंजेक्ट किया गया है, स्लो पॉइजन की तरह है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट विच वी हैव टू डील विद, कि पैसा कौन दे रहा है, वो आपसे क्या लिखवा रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, कहां पे कह रहा है कि आप शूट करिए, ताकि क्या दिखेगा, किस तरह की मैसेजिंग इमेजरी आएगी जो कि सेट हो जाएगा, और फिर सबलिमिनल कंडीशनिंग, ये सब मास मीडिया का ये एक बहुत बड़ा, इट्स ऑल्सो बीइंग यूज्ड. A lot of people very smartly weaponize it. So do we have to be aware of it? Are filmmakers really bothered, or are they saying यार मेरा पैसे, मेरी पिक्चर रोल कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, पिक्चर अगर हिट हो जाएगी तो फिर कौन पूछेगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं अगले प्रोजेक्ट पे चला जाऊंगा. I'm just asking you, Ravi ji, because you've been part of this industry for such a long time. Yeah, first of all, thank you so much, Gautam, that you've seen my shows, and and my shows, all my shows erupted out of, I'm a creative man, I write what disturbs me. When I was young, relationships disturbed me a lot, but today my country, what's happening to my country disturbs me. Now, section wise you asked me कि यार वो RSS जो है वो ऐसा ऐसा कह रही है, और RSS ने ऐसा ऐसा. देखिए, हम सिनेमा में आज से 30 या 40 साल पहले मैं 8 बजे समाचार सुनता था, मैं आज आपके साथ रूबरू हूं और पूरी दुनिया देखेगी. ये चेंज तो आ गया है. मैं जब छोटा था, मैं अमर चित्र कथा पढ़ता था, और बहुत पढ़ता था अमर चित्र कथा. मैं आज चाहता हूं कि अमर चित्र कथा को सिनेमा में कन्वर्ट किया जाए. सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई मीन, वी हैव a digital medium to do that, and it should be done, So I don't really think. और रही बात the lyrics or whatever, it's such a huge platform, और इतने सारे एंटरटेनमेंट के आनंद प्लेटफॉर्म्स आ गए, म्यूजिक आ गए, टॉक शोज आ गए. आज आप टॉक शोज पे देखो, खड़े होके कभी राम को गाली दे रहे हैं, कभी लक्ष्मण को, कभी सीता की मजाक उड़ा रहे हैं. आप कितनी पुलिसिंग करेंगे? मैं आप समझ रहा हूँ, पंजाबी गाने, जट और बंदूक और जट और ड्रग्स और ये जट जो है, बट यू कैनॉट मॉनिटर एवरीथिंग. आई मीन, द ओनली थिंग दैट यू कैन गो इज टू गिव योर राइट नैरेटिव टू. देखिए, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मिल्खा सिंह आज से कितने साल पहले रिलीज हुई थी? पोस्ट मिल्खा सिंह you have no, I mean, the amount of curiosity that the youngsters had to hit the internet and find out who Milkha Singh was. It was a kind of a revolution on the internet कि सारे youth जो थे, बच्चे Milkha Singh जानना चाह रहे थे. So it certainly brings about an awareness, and I think we should do that. India is a land of culture. India is a land of a very rich culture. हमें तेनाली राम भी बताना चाहिए, मुल्ला नसरुद्दीन भी बताना चाहिए, अकबर बीरबल भी बताना चाहिए, और गुरु गोविंद सिंह जी भी. So what's wrong in it? I mean, we have the medium, we should do it. Let us not bind our cinema and entertainment to only nation. I mean, this is not the right revolution or renaissance. I mean, we want to see entertainment also.
But at the very same time, if you look at directors who have been big names, Raj Kapoor, ya Manoj Kumar, ya Bimal Roy, Guru Dutt, they never made films without a social message. That's why they were big directors. ये एक आप कभी भी इसकी एनालिसिस करना, वो बड़े इसलिए थे क्योंकि उनके सोशल कॉज. अगर आज भी आप देख लीजिए, जोया अख्तर और राजकुमार हिरानी एक्सेप्ट संजू, they have made very relevant, socially relevant and messageful films. That's why they are big directors. But restricting ourselves to nationhood and religion and, I certainly don't subscribe that. I am a man who मतलब उसमें एक टाइम पे राज कपूर, बिमल रॉय, गुरु दत्त, नासिर हुसैन, सुभाष घई, ये सब साइमल्टेनियसली चले थे और सारे फ्लेवर्स हमने साथ में देखे. That is what a bouquet of cinema is. Let's not bind it to only nationalism. And the theme of the story does not need to be nationalism, but nationalism needs to be, or perhaps a sense of Indianness needs to be intrinsic when you're telling the whole story or whatever your subject matter is. That's what I'm saying. A lot of our cinema, like Gautam put it right, had been leftist or center-left. Do you believe that there needs to be this alternative which is slightly center-right, brings the whole discourse center, or perhaps opens it up to all sorts of cinema, one not being intolerant to the other, where the entire fraternity right now is like split right in the middle and trying to take sides? That does not happen. When I say reinforcing Indianness is even in your locales, you choose locales in India. You don't need to go into foreign locations to say foreign is better. Well, see, the subliminal messaging is what देश से better within. हाँ बेटा मेरा फॉरेन रिटर्न है, लंदन रिटर्न है, वहां पढ़ता है, वहां है तो अच्छा है. इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में और इंडिया में पढ़ के आया तो नॉट सो कूल. सो आई विल नॉट हैव दैट स्टोरी. स्मॉल टाउन गाय इज ऑलवेज अ स्ट्रगलर. बड़े शहर का तो फिर वो रईस बाप का बेटा होगा. या these kind of narratives, very sticky narratives, which also tell you in your this one that boss, if I have to be successful in life, मुझे छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा. मैं इस देश में मैं कुछ नहीं कर सकता. You understand that, Gautam? See, this has been so underlying there across किसी भी पिक्चर में वो ऐसे ही होता है. See that's what I always say, that I am a strong believer, and when I'm attempting to chronicle a certain period in cinema, it is true that cinema is a reflection of society. But what is even truer, if I can say that, is that cinema actually tells society how to reflect, which is something the power of the powers be is slowly withering away right now. I mean, hats off to Raj Kapoor. I'll be an idiot to say that Raj Kapoor was not a great storyteller. He was a master craftsman. But then there was some messaging that Rajji put out, which became certain truths of life. I mean, I'll give you a small example. I mean, the middle cinema, which originated in the late 60s, early 70s, blossomed with Rishikesh Mukherjee and Basu Chatterjee. And God bless them, great cinema. They had great stars. Yes. But tell me something, who made it okay to say कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, to become a mantra? आज जो हम फोटोज देखते हैं 70s India, 60s India, standing in a line for an HMT watch. I mean, all of us, if you speak to our mothers, they still have a smile in their eyes, a twinkle in their eyes when you talk about नूतन गैस. तुम्हें नहीं पता पहले तकलीफ होती थी, नूतन गैस मिला. अरे किसने कहा कि इतना ही गैस होना चाहिए? किसने कहा कि अब मैं राशन की कतारों में खड़ा नजर आता हूं? This romanticizing the lack is a tool which is inculcated in IPTA based. I'm just taking the name for the sake of argument because most of them were card carrying members of leftist ideology. Mazroo Sahab ho, Jinder Singh ho, Sahir ho, Kafi Sahab ho. Great poetry when they write कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बहुत अच्छी बात है. But they also wrote certain things which made us like the situation that we are in. Why should I feel happy with what I have? क्यों ना मैं ज्यादा का करूं इरादा? So ये जो अभी the India story right now is not just limited to films. It's not just limited to fiction. अगर ये सोने की चिड़िया थी तो वो क्यों थी वो पता होना चाहिए लोगों को. I think culturally, politically, socially, we haven't had a truth in reconciliation. There are certain truths that we need to accept and come to terms with them. And I think cinema, like most literature, is a certain tool which is bringing that
closer to us. And I think that change, this is ये एक्चुअली अमृत काल है इंडिया का. तो गजेंद्र जी आपके साथ इस वार्ता को यही संपन्न करेंगे. तो लास्ट वर्ड आपका. अपनी पूरी इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ. जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जिनका नाम है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो पुरानी फिल्में जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने दिए, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनको अगर वो मॉडर्न वे में बना के पेश कर सके तो मुझे लगता है एक नया दौर जो है उन फिल्मों का वापस आएगा और एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचेगा. चलिए, इसी नए दौर की उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सप्रेम धन्यवाद. एंड आई होप दैट वी हैव अ लॉन्गर कन्वर्सेशन ऑन दिस वेरी वेरी सून. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू सो मच. Development